प्राणायाम। प्राण अर्थात जीवन शक्ति एवं आयाम अर्थात उसका विस्तार। प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ है प्राणों का व्यायाम। प्राणायाम का महत्व या लाभ। यह शरीर को बल तथा मानसिक ऊर्जा प्रदान करता है। इससे मन को शांति तथा मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। स्मरण शक्ति बढ़ती है, रक्त शुद्ध होता है और शरीर निरोगी होकर दीर्घायु को प्राप्त होता है। मन की चंचलता पर नियंत्रण होता है और चेहरे की कांति बढ़ती है। मोटापा दूर होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से प्राणायाम से शरीर के विभिन्न हिस्सों और अंगों पर दबाव पड़ता है, जिससे उस अंग का रक्त संचार बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप उन अंग की स्वस्थता बढ़ती है। भस्त्रिका प्राणायाम। Sit in Padmasana or Siddhasana. Hold Dhyan Mudra with your fingers. Take a deep breath and fill your lungs with air and then release the breath. Inhale deeply and exhale deeply. This can be done for 1 to 2 minutes. Benefits of Bhasrika: energizes body and mind, strengthens abdominal region, strengthens nervous system. It is a great stress buster, great for lungs, heals thyroid problems, cures cold and flu, and purifies blood. Kapalbhati Pranayam. Take a deep breath and just exhale or breathe out continuously for 1 to 5 minutes. Do it slowly on one stroke in 1 second. You can do this pranayam for 5 to 10 minutes. It helps in loss of belly fat, removes acidity and gas-related problems, great for lungs and heart, increases supply of blood to various parts of body, improves facial radiance, great for focus and checks forgetfulness. Anulom Vilom Pranayam. Sit in Padmasana. Take your right hand thumb to your right nostril and 2 fingers on your left nostrils. Inhale deeply with your right nostril and exhale deeply with your left nostril. Repeat this process. This pranayam is excellent for respiratory issues, asthma and allergies, relieves headaches, removes toxins from body, builds up stamina in the lungs, reduces stress, anxiety and depression. Inhale, exhale. करो करो शाबाश।
Bhramari Pranayam. Put your thumb on the outer face part of your ear. Last 3 fingers on your eyes and your index finger on your forehead. Now breathe deep and press all your fingers and thumb. Make a humming sound of Om. Do it for 3 to 5 times. You would feel Om sound waves gently vibrate your tongue, teeth and sinuses. Benefit of Bhramari. It is best cure for stress, best way of self-healing, lowers blood pressure, relieving in hypertension, gradually removes anger, helpful in preventing heart blockages, helps in inducing deep sleep. Udgit Pranayam. Gently close your eyes, take a deep breath and chant the Pavitra and divine mantra Om. Benefits of Udgit Pranayam. Gives divine shine and stunning aura to the face. Connect your body and soul with spirituality. Removes anxiety, helps to deal with fear and sadness, increases strength. You can do this pranayam for 3 to 5 or more times every day. प्राणायाम से जीवन को साधा जा सकता है, अतः प्राणायाम करें और मानसिक, शारीरिक तथा आध्यात्मिक रूप से सदा स्वस्थ रहें। धन्यवाद।